welcome back to my channel. I am Vanshika Tyagi and today we're going to discuss odontogenic keratocyst, that is OKC. In the first part of this series, we discussed what a cyst actually is and its various classifications. In the second part, moving forward, we will first discuss odontogenic keratocyst. So let's begin with the topic. Starting with the introduction and the syndromes associated. So the OKC is a developmental cyst arising from the dental lamina remnants, that is, the cell rest of Ceres. It was first described by Philipson in 1956, and in 1963, Pinbock and Hansen described the essential features of this type of cyst. Talking about the definition, OKC is a developmental cyst arising from the remnants of dental lamina, that is, the cell rests of Ceres, with the biological behavior similar to the benign neoplasms, with the distinctive lining epithelium of 6 to 10 cells in thickness and that exhibits basal layer of palisaded cells and a surface of corrugated parakeratin. So, OKC is a cyst that is derived from the remnants of dental lamina with the biological behavior similar to the benign neoplasms, with the distinctive epithelial lining of 6 to 10 cells in thickness and that exhibits basal layer of palisaded cells and a surface of parakeratin. Also, the lesion is named keratocyst because the lining epithelium secretes so much keratin that it almost fills up the cystic lumen. अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1967 में टॉलर ने बोला कि ये एक बिनाइन नियोप्लाज्म है, but in 2005 WHO reclassified the cyst and labeled it as keratocystic odontogenic tumor, यानी कि KCOT, based on its aggressive behavior, reoccurrence and mutation in PTCH gene. उसके बाद WHO ने 2017 में दोबारा एक क्लासिफिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने KCOT को रीक्लासिफाई किया इनटू द ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट. तो सबसे पहले 1967 में टॉलर ने बोला कि ये तो एक बिनाइन नियोप्लाज्म है, बट WHO ने 2005 में उसको KCOT की कैटेगरी में डाल दिया. इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से: एग्रेसिव बिहेवियर, इट्स रीअकरेंस एंड म्यूटेशन इन द PTCH जीन. Then in 2017, WHO reclassified it as odontogenic keratocyst. Now, as I just told you, it is aggressive in behavior and it has the highest reoccurrence rate. And there is a presence of keratinized epithelial lining. Like I told you here, that it has a surface of corrugated parakeratin. Now, the common site is posterior mandible, especially in the ramus and the angle region. एज और जेंडर की बात करें तो इट्स पीक इंसिडेंस इज इन 2nd to 4th decades and slightly male predominance मतलब मेल्स में थोड़ा सा फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा पाया जाता है. Now talking about the syndromes associated, which is very important from MCQ point of view. So the syndrome associated with OKC is nevoid basal cell carcinoma syndrome. इसको हम Gorlin-Goltz syndrome भी बोलते हैं. Whereas एक syndrome हमारा होता है Goltz-Gorlin syndrome. अब वो क्या होता है that you have to find out and comment down below. तो अब जो हमारा nevoid basal cell carcinoma syndrome है, इसमें क्या होता है, there are multiple OKCs. बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन यानी कि BCC दैट यू विल स्टडी लेटर ऑन. बाइफिड रिब्स होते हैं, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन हो जाता है जिसको हम फॉल्स सेरेब्राई भी बोलते हैं, एंड स्केलेटल एबनॉर्मैलिटीज एंड फेशियल मीलिया इज प्रेजेंट. Now this OKC has highest malignant potential as well as the highest incidence of reoccurrence. Now coming to the clinical features of OKC. देखो, अगर सबसे पहले हम एज की बात करते हैं तो ये हमारा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली टू इवन वेरी एल्डरली पीपल, बट 10 ईयर्स से कम के बच्चों में बहुत रेयर ही पाया जाता है. और जैसे भी मैंने बताया, जो इसका पीक इंसिडेंस होता है वो हमारा होता है 2nd to 4th डेकेड ऑफ लाइफ. टॉकिंग अबाउट द सेक्स प्रेडिलेक्शन, तो मैंने बताया अभी कि मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है. एंड द साइट मैंडिबल में मैक्सिला के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. अब अगर हम मैंडिबल की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा होता है रैमस एरिया में,
यानी कि जो हमारा थर्ड मोलर वाला एरिया है, फॉलोड बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर एरिया एंड देन फॉलोड बाय द एंटीरियर सेगमेंट। और इसी तरह अगर हम मैक्सिला की बात करते हैं तो थर्ड मोलर वाले एरिया में ज्यादा होता है कंपेयर टू द कस्पिड एरिया। नाउ इट इज ऑफ्टन एसिम्प्टोमेटिक एंड डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली ऑन रेडियोग्राफ्स। मतलब पेशेंट ऑफ्टन कंप्लेन लेकर नहीं आता है, रेडियोग्राफ करते हुए हमको मिल जाता है। दिस लीजन व्हेन फाउंड इन द चिल्ड्रन is often discovered as multiple OKCs, which is associated with the nevoid basal cell carcinoma syndrome. And on an average, around 50% of the patients are symptomatic prior to seeking the treatment. अब अगर हम इस लीजन को ऐसे ही छोड़ दें और ये लीजन बड़ा हो जाता है तो ये क्या क्या कॉज कर सकता है? इट मे कॉज स्वेलिंग एंड बोनी एक्सपेंशन. It may cause pain or discharge if it is secondarily infected, tooth displacement or even root resorption, and paresthesia if the mandibular canal is involved. Along with it, हमें drainage दिख सकता है in the form of sinus or fistula, and expansion of bone can be there. अब अगर हम इस लीजन के सिस्टिक फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं तो हमें एक चीजी मटेरियल मिलता है which is suggestive of keratin, and it may also contain a straw colored fluid. चलो अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजिक एंड हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की, स्टार्टिंग विद द रेडियोलॉजिकल फीचर्स। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंसी होगी विद स्मूथ कॉर्टिकेटेड बॉर्डर्स। अब ये जो हमारी रेडियोल्यूसेंसी है यूजुअली ये हमारी यूनिलॉक्यूलर होती है, बट अगर बहुत ज्यादा बड़ी सिस्ट है तो कभी कभी ये मल्टीलॉक्यूलर भी प्रेजेंट होती है। जो हमारे लीजन के बॉर्डर्स होंगे वो स्केलॉप्ड होते हैं। स्केलॉप्ड मतलब इस तरह से होंगे, इसको हम बोलते हैं scalloped margins. So scalloped margins are seen. So scalloping of the border is a very frequent finding in OKC. Now it is common in the posterior body and ramus of the mandible and often associated with impacted tooth, commonly third molar. Minimal buccolingual expansion हमको मिलता है cortical plates का, which distinguishes it from the dentigerous cyst. And scalloping of the margin is seen as I just told you, and it may cause tooth displacement and rarely root resorption. Along with it, the cystic cavity may contain keratin, and sometimes the lesion in the mandibular third molar area may even displace the inferior alveolar nerve canal. इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की। तो एपिथेलियल लाइनिंग हमारी बहुत थिन और यूनिफॉर्म होती है विद 6 to 10 cells in thickness. Parakeratinized stratified squamous epithelium is present and has corrugated or wavy surface keratin layer. ये जो हमें लेयर दिख रही है कुछ ऐसे वेवी है ना, इसको हम बोलते हैं corrugated surface. Now the basal cell layer is palisaded, hyperchromatic and columnar. इसको हम बोलते हैं picket fence appearance. और इसी का हमारा दूसरा नाम है tombstone appearance. And there is a flat epithelial to connective tissue interface with no retipex. यहाँ पर you can easily differentiate that there are no retipex here. तो हमारे लाइनिंग एपिथेलियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हुए? That it has a parakeratinized surface which is corrugated, rippled or wrinkled in nature. And this layer is 6 to 10 cells thick with a prominent palisaded polarized basal layer of cells, which is often described as the picket fence appearance or the tombstone appearance. Histologically, it has stratified squamous cell epithelium, which produces 80% of parakeratin, 10% of orthokeratin, and 7% of both of these. And there are no retipex present. Now, talking about the cyst wall, a thin fibrous capsule is present, which may contain the daughter or satellite cells. Inflammation may cause loss of the typical epithelial features. Now, in some cases, the apparent islands of the epithelial cells are present, and these islands are called as the daughter or the satellite cells. Now, if we talk about the cystic lumen, that is this part of the lesion, it is filled with a thin straw-colored fluid or a thick, creamy or cheesy material, which is suggestive of the keratin. Also, cholesterol and hyaline bodies are also present at the site of inflammation. Coming to the differential diagnosis and the treatment plan. अब अगर हम differential diagnosis की बात करते हैं, we have dentigerous cyst, lateral periodontal cyst, ameloblastoma, residual cyst and radicular cyst.
Talking about the treatment plan, we can go for enucleation and curettage for small lesions, marsupialization or decompression for large cysts to reduce size before enucleation. We can do peripheral ostectomy to remove the remnants, and chemical cauterization can be done using Carnoy solution, which is optional. Now the OKC has a recurrence rate of 30 to 60%. And the recurrence is most common in the patients with the nevoid basal cell carcinoma syndrome. Now comparatively, OKC in the mandibular molar region, angle and ascending ramus has a higher reoccurrence rate. And that sums up our topic for today. तो सबसे पहले हमने OKC का एक बेसिक इंट्रो लिया, डेफिनेशन देखी और उसकी हिस्ट्री देखी, कैसे कैसे उसको इधर उधर प्लेस करा गया. And then finally in 2017, WHO reclassified it as odontogenic keratocyst. We read about some of the classical features and the syndromes associated. Then we read about the clinical features, followed by the radiographic and the histological features, and then we read about the differential diagnosis and the treatment plan. Alright, so that's it for today. In case of any doubts or queries, comment down below in the comment section and I'll be surely replying to them. Thank you and see you on the other side.